My dear students, you are watching Park Maths online classes and me Sir Gaurav is your illustrating the topic vectors, and till now we have completed the scalar product or the dot product of two vectors, and exercise 10.3 is completed in the last video. So today we are going to start the next topic, which is known as your vector or the cross product, and this is your exercise 10.4. So let's discuss the basic concepts related to the vector product. First of all, so what is the definition of vector product? Let us consider any two vectors A and B. So its cross product or vector product is given by magnitude, product of the magnitude of both the vectors, sine of the angle made between them, and a unit vector n. N cap is a vector which shows the direction of the cross product two vectors and which is perpendicular to both the vectors A as well as vector B. So by taking magnitude, this will be equal to vector A magnitude, vector B magnitude, and sine theta. So in case if you want to find the angle between the two vectors whose cross product is given to you and also magnitude are also given to you, then this will be given by sine theta is equal to A cross B upon magnitude upon A magnitude and B magnitude. Now let's see, if theta is your 0, means theta made between the two vectors is 0, then you will find sine 0 will be 0, and by cross multiplying A cross B magnitude is equal to 0 implies A cross B will be 0. So अगर थीटा 0 आता है तो साइन 0 वैल्यू 0 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से द A cross B will also be 0. This implies that both the vectors are parallel to each other. So vector A is your parallel to vector B because angle between them is your 0. So this is your very much clear that whenever two vectors are given in such a way that the cross product of two vectors are 0, it implies the vectors will be parallel to each other. देखिए बच्चों, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर किया था, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 मिलती है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो वेक्टर्स हमारे पैरेलल होते हैं. सो लेट्स सी नाउ व्हाट विल हैपन इन केस व्हेनेवर A cross A is there. A cross A means the both vectors will be same. So which implies A magnitude and your sine 0, because दोनों सेम वेक्टर के अंदर जो एंगल बनेगा दिस इज 0, सो दिस विल साइन 0 इज 0 विच इम्प्लाइज 0. सो अगर दो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो दैट विल बी कम्स आउट एज ऑलवेज 0. सिमिलरली लेट्स सी व्हाट हैपन इन केस ऑफ I cap क्रॉस I cap, J cross J cap, K cap क्रॉस K cap. दिस विल अगेन बी 0, क्योंकि दो वेक्टर्स बच्चों I cap क्रॉस I cap दो सेम वेक्टर हैं और सेम वेक्टर के अंदर एंगल 0 बनता है, तो 0 बनेगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होने के कारण इनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो पाएगी. नाउ व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ I cap क्रॉस J cap, दिस विल बी इक्वल टू K cap. व्हेनेवर यू विल डू J cap क्रॉस K cap, this will be equal to I cap, and this can be illustrated through this circle. Let us this I cap, this is your J cap, and this is your K cap. If I cross J you want to do, this will come out K cap. J cross K you want to do, then this will come out I cap, and K cross I cap will be your K cap क्रॉस I cap will be your J cap. बट अगर आप डायरेक्शन अपोजिट चलते हैं लाइक दिस, अगर आप J cap क्रॉस I cap जाएंगे दिस इज इक्वल टू माइनस K cap. सिमिलरली अगर K cap क्रॉस J cap जाएंगे दिस विल बी योर माइनस I cap, बिकॉज डायरेक्शन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रॉस प्रोडक्ट. सो सेम अगर आप I cap क्रॉस K cap करते हैं दिस इज माइनस J cap. Similarly, A cross B is not equal to B cross A because direction will be opposite. So this will be equal to minus of B cross A. So in case whenever A cross B is there, this can be replaced only by minus of B cross A. It can't be replaced by B cross A. So you should have to keep in mind. Now, how can you find the cross product of two non-zero vectors which are given to you?
Let's see, if vector A is given as your 2i cap plus j cap plus k cap, and vector B is given as I cap plus 2j cap plus 3k cap, then the cross product of these two vectors can be obtained through the determinant method by taking I cap, j cap, k cap as the first row. Then the second row will be the coefficient of the components of vector A, which is your 2, 1, 1. Then take the component of vector B, which is 1, 2 and 3. Now you have to expand this determinant by the first row, and this will give you our I cap of, this is 3 minus 2 minus j cap of, this is your 6 minus 1 plus k cap, this is your 4 minus 1, which implies I cap minus 5j cap plus 3k cap. So this is your A cross B, and you know very well how to expand the determinant. This is your in chapter number 4. I hope everyone knows how to expand the determinant by taking first or second row or third row. So this is your A cross B. Now what are the uses of the cross product of two vectors? Let me tell you. What are the applications? We can actually find the area of triangle, area of rectangle or area of parallelogram through the cross product. The formula given to you is your as area of a triangle using cross product. This is given by A vector cross B vector magnitude, where vector A and vector B are your the adjacent sides of the triangle. Vector A and vector B are representing the sides, adjacent sides actually. Adjacent sides of the like this. This is your any triangle. This is vector A. This is vector B. So both the vectors can be taken in the cross product and will give the area of the triangle. Similarly, we can find the area of rectangle, or it parallelogram will also have the same formula. This is given by, this is to half is to be taken. Area of triangle is given by half of A cross B vector. This is half of A cross B magnitude, and the area of parallelogram is given by vector A cross vector B magnitude. So this is your the area of parallelogram, where vector A and vector B again are the adjacent sides of the rectangle or the parallelogram. This is the rectangle, this is vector A and this is vector B. So vector A and vector B are representing the adjacent sides of the rectangle, same as A and B are representing the adjacent sides of the triangle. So in case of triangle, half of A cross B magnitude is there, but in case of rectangle, this is your A cross B magnitude only. So dear students, this was a concept about the cross product or the vector product. So we can start the exercise now. And one more thing I want to tell you about the unit vectors. In case if you are given the two vectors A and B, and you want to find the यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स. देखिए बच्चों, अभी तक यूनिट वेक्टर के बारे में हमने क्या क्या डिस्कस किया है. पहले हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है. अगर आप चेक करना चाहते हैं वेदर गिवन वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर और नॉट, देन यू नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. अगर वो उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है तो इसका हम कह सकते हैं कि वो हमारा यूनिट वेक्टर है. नेक्स्ट केस वाज दैट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर. अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, देन दिस विल बी गिवन बाय वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए. यूनिट वेक्टर in the direction of any vector is given by, this is vector A upon its magnitude. This is your A cap. But now we will find a unit vector which is your perpendicular to two vectors A and B, and this is given by A cross B upon
A cross B magnitude with your positive and negative sign. So this is the formula to find the unit vector which is given perpendicular to two vectors A and B. This can be obtained through this formula, and this was the simple formula which we have used in the last exercise, is that if any unit vector you want to find in a direction of a vector, then this is given by vector upon magnitude. But यहाँ दो वेक्टर के ऊपर अगर यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, दैट इज कैन बी ऑब्टेन थ्रू दिस फॉर्मूला. So this was all about the concept of exercise 10.4. Let me start the exercise 10.4. Let's do the question number 1 first, which is very much easy and you can do by yourself. This is given that find the magnitude of A cross B if vector A and vector B is given to you. तो बच्चों यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों गिवन है, और मैंने अभी बताया आपको कैसे दो वेक्टर्स अगर आपको नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है, देन हाउ कैन यू फाइंड द A क्रॉस B. उसके लिए आपको डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करना होगा. फर्स्ट रो में I कैप J कैप K कैप लिखिएगा, देन सेकंड रो के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, देन थर्ड रो के अंदर कंपोनेंट ऑफ B, एंड यू विल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एंड फाइंड द A क्रॉस B. देन यू कैन टेक द मैग्नीट्यूड. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 2 is totally based on this formula. Especially this is given that find a unit vector which is perpendicular to each of the vectors A plus B and A minus B. We need to find a unit vector which is perpendicular to two vectors A plus B and A minus B, and the value of vector A and value of vector B is given to you. So the formula will be applicable only in this question is this is question number 2, and this is obtained by A plus B cross A minus B upon A plus B cross A minus B, and your magnitude as well by taking plus minus. So first of all you will find the vector A plus B, then you will find vector A minus B, and then you should have to take the cross product of both the vectors and then divided by magnitude as well, will give the unit vector which is perpendicular to the two vectors A plus B and A minus B. So this is your again homework. My dear students, you can do by yourself. और जितना काम अपने हाथ से करेंगे आप बच्चों, मैथ्स उतना ही आपके पास आएगा, उतना नज़दीक आप मैथ्स के डेप्थ में जा सकते हैं by doing by yourself. So expected from yourself, your side to do this question. So let me do the question number 3. मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? Good question is given to you, and what it states, this is given that if a unit vector A makes angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with J cap, and acute angle theta with K cap, then find the theta and the components of vector A. It's very comfortably given to you that the vector A is your unit vector. So it's very clear that magnitude of vector A will be equal to 1. क्योंकि वेक्टर ए आपको यूनिट वेक्टर गिवन है, तो इसका मतलब हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी इक्वल टू 1. और बच्चों ये जो यूनिट वेक्टर है, दिस इज मेकिंग एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, पाई बाय 4 विद जे कैप, एंड एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप. तो हमें एक तो एक्यूट एंगल निकालना है, साथ साथ में हम लोगों को कंपोनेंट ऑफ ए निकालने हैं. देखिए बच्चों, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए. एक तो जैसे इन्होंने बोला है वैसे करते चले जाएंगे, क्योंकि वेक्टर ए के कंपोनेंट्स निकालने हैं तो वेक्टर ए कंपोनेंट्स हम लेट कर लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर 1 रखते हैं, वहाँ एक्स वाई जेड में रिलेशन आएगा. फिर उसके बाद आप कहता है कि कोस्ट, ये जो एंगल हमारा जो वेक्टर है ए, ये आई कैप के साथ पाई बाय 3 एंगल बनाता है. सो इट मीन्स वेक्टर ए और आई कैप दो वेक्टर्स हो गए हैं. दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल निकालना होता है, देन फॉर्मूला इज गिवन बाय कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड. इस तरह से हमें रिलेशन मिलता चला जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू आती चली जाएंगी. एंड अनदर मेथड इज ऑल्सो देयर विच आई एम गोइंग टू डू. एनी यूनिट वेक्टर कैन बी और रिटन एज, this is a cap is your cos alpha multiply by I cap cos beta multiply by j cap cos gamma multiply by k cap. Any unit vector can be represented in this form. इसका रीजन क्या होता है? लेट मी टेल यू फर्स्ट. cos alpha क्या होता है? cos alpha is given by x1 upon magnitude, means x1 is the scalar component along x axis.
cos beta is your y1 upon magnitude, cos gamma is your z1 upon magnitude. और यूनिट वेक्टर क्या होता है? दिस इज गिवन बाय unit vector is a cap is always given by vector a upon magnitude of vector a. So let me take any vector as your xi cap plus yj cap plus zk cap. If this is any vector a, then its unit vector is given by x upon x square plus y square plus z square under the root into I cap plus y upon x square plus y square plus z square under the root into j cap plus z upon same x square plus y square plus z square under the root into k cap. And what is this? This is your cos alpha, direction cosine along x-axis, scalar component of the vector divided by magnitude. So this can be represented by cos alpha into I cap. This is cos beta into j cap, cos gamma into k cap. So any unit vector can be obtained if angles are given to you, then you can find the unit vector by taking direction cosines as cos alpha, cos beta, cos gamma with I cap, j cap, k cap. So I'll use that funda in this question, and this will give you a short calculation. The calculation will be your easier one. So this a cap we want to find, हमें unit vector a निकालना है. Alpha is given to you, beta is given to you, gamma is not given to you. So let me take that one. So a cap will be और given by cos, ये बनाते हैं आपको x एक्सिस के साथ, दिस इज मेक एन एंगल π/3 into I cap plus then cos π/4 into j cap plus cos gamma is not given to you, that this is theta into a cap, and this can be written as your vector a is your cos π/3 cos 60, this is your 1/2 I cap plus 1/√2 j cap plus cos theta into k cap. This is number 1. कंपोनेंट्स में पहले दो कंपोनेंट्स तो हमारे आ चुके हैं, x के अलोंग और y के अलोंग. z के अलोंग कंपोनेंट निकालना है मुझे और दूसरा थीटा निकालना है. निकालने के लिए क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज एज अ यूनिट वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1. दिस इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 1, सो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर plus cos square theta under the root is equal to 1, which means 1/4 plus 1/2 plus cos square theta is again 1. By taking square, by squaring both sides, root cancel हो सकता है. So this is your cos square theta will be given by 1 minus 1/4 minus 1/2. Taking 4 as LCM, this is 4 minus 1 minus, this is 2, and this is 1/4. So cos square theta, is it visible here? Cos square theta is equal to 1/4 and cos theta will be your 1/2 and theta will be your again π/3. So theta is π/3 and the value of cos theta is 1/2. So theta I got as 1/π/3 60 degree and the value of cos theta is 1/2, so the third component is your 1/2. So the vector, this vector a will be replaced by 1/2 I cap plus 1/√2 j cap and plus 1/2 k cap. This is the required solution of the given question, and theta is your π/3. So in this way we can solve the question number 3. So let's see the question number 4, dear students. Again easy question comes. Let's see the question number 4. We want to evaluate the product a minus b cross, this is a plus b, and we need to prove that this is equal to twice of a cross b. Very simple and very easy question. The question number 4, we have to just evaluate the product a cross a plus a cross b minus b cross a minus b cross b. You know very well, मैं अभी भी बताया आपको, a क्रॉस a की वैल्यू 0 होगी, b क्रॉस b भी 0 होता है. सेम वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो 0 होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. दोनों बीच में एंगल 0 बनेगा और एंगल 0 बनता है तो साइन 0 0 होता है.
So this is your 0, this is 0, and this is simply A cross B minus of B cross A. But minus of B cross A can be replaced by plus of A cross B, because I have told you that A cross B is always equal to minus of B cross A. So this is 2 times of A cross B. So dear students, this was the question number 4, and the question number 5 is very much easy because the cross product is equal to given as 0. So आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और जो लैम्डा और म्यू के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर टू बी पुट सेपरेटली इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी वेक्टर बनेगा, राइट हैंड साइड में भी 0 वेक्टर है. 0 वेक्टर का मतलब होता है 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप. तो हर एक आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जहाँ पर जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे आई कैप के, चाहे लैम्डा की फॉर्म में या फिर आपके म्यू की फॉर्म में, दे आर टू पुट इक्वल टू 0 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू. Now the rest of the questions are completely homework for all of you, because question number 7 is just to put down the value of A, B, C vector. Question number 8 same we have done in the last exercises, as A vector is 0 and or B vector is 0, this will imply that A cross B will be 0. देखिए अगर A या B में से कोई वेक्टर 0 है तो A क्रॉस B 0 ही होगी, 100% श्योर है. लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर A क्रॉस B 0 है तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 भी बन सकता है, मीन्स दोनों वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं. इन दैट केस A क्रॉस B इज 0, चाहे वेक्टर A और वेक्टर B दोनों के दोनों नॉन जीरो क्यों ना हो. वेक्टर A और B दोनों नॉन जीरो होने के बाद भी A क्रॉस B 0 हो सकती है ड्यू टू दे आर पैरेलल टू ईच अदर. So question number 9, question number 10, area of parallelogram, area of triangle you have to find. So this is all about the exercise 10.4. Or if any question you face some problem in any of the question, you can contact me or call me or WhatsApp me. Till then, thank you and have a nice day. In the next video, we will start the miscellaneous exercise, and till then, thank you.